Assalamu alaikum, 6th class in Social Studies for Pakistan, page number 19 and lecture number 15. Today we have to start our new chapter, chapter number 5, about the history of the Alexander the Great. That was existed on the world approximately 323 to 356 before Christ on the world. Okay, before starting our new chapter, we should discuss our previous lesson. That what have we studied in the previous lesson. Students, in the previous lesson, we were discussing about the great empire of the Persian people who were ruling on the world approximately 330 to 550 before Christ. We discussed about their location on the world, their government system, that how are they ruling, and what type of the reforms they adopted at their time. And then we learned about their culture system, their civilization, and their wearing style, their cooking style as well. So let's start our new topic about the history of the Alexander the Great. As I have told you, it was existed on the world 323 before Christ to 356 before Christ. Okay, Alexander the Great was a great emperor on the world who conquered the whole world. In this lecture, we will read about his personality, that he has such a great or refined personality. He was a noble person, and uh, he was very brave person, and he conquered the whole world. He got the victory on all over the world. So let's start. Before starting, we should read, or we should see the map of his empire. Macedonia was a small city, or you can say the small area. From he started his wars, and from here Macedonia to Damascus, and then Babylon, and in these ways he started to conquered the world. And then he came to Karachi, and on the way to Karachi, he goes to Texla, and Texla to here. And here you can see that in the previous lecture we have learned about it, that Texla was the capital city of the Persian Empire. And here, from here to he started to go over there. So in this way, he conquered the whole over the world. So let's start about the personality, or about the background of the Alexander the Great. Okay students, Alexander the Great was relating about the city Macedonia. He was living on the Macedonia, the very small kingdom or the very small state in which they used to rule. His forefathers and ancestors. It means उसके जो अबाउ अजदाद हैं वो कहाँ पे रूल करते थे पहले? मैसिडोनिया. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी और किंगडम जहाँ पे वो अपनी बादशाही तो उन्होंने अपनी कायम की हुई थी. एंड दैट वाज एग्जिस्टेड ऑन द नॉर्थ ऑफ द ग्रीस. ग्रीस मीन्स यूनान के शुमाली इलाका में, उस तरफ जो ये कंट्री जो छोटी सी किंगडम है वहाँ पर वाक़या थी. एंड देन सेकेंड brilliant leader of the Macedonia. Who was a brilliant leader of the Macedonia? He was Philip. Philip was the father of the Alexander the Great, who was ruling on the area, in the area of Macedonia. He was very brilliant, and he wanted to conquer the world. He wanted to get victory on the all over the world. जो अलेक्जेंडर का बाप था, सिकंदर आज़म का जो बाप था, वो बहुत ज़्यादा ज़हीन इंसान था और वो पूरी दुनिया को फ़तह करना चाहता था. उसकी भी ख्वाहिश थी सिकंदर से पहले कि वो पूरी दुनिया को फ़तह करे. और उसका नाम जो है फ़िलिप है, और बहुत ज़्यादा रिफाइंड पर्सनैलिटी का था और अपने रूल्स और रेगुलेशंस में बहुत अच्छा इंसान था. एंड देन फ़िलिप was a father of Alexander that we have read.
उसका जो बाप अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसका कौन था, फिलिप. Then from here he got the education. It means from here he get the guidance about his life and about the rules and the living style. The tutor of the Alexander the Great was Aristotle. Aristotle means students Aristo. That was a philosopher, very famous philosopher. बहुत ज़्यादा मशहूर जो ये फ़लसफ़ी है, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कई सौ सालों पहले, कई हज़ारों सालों पहले दुनिया में मौजूद थे, और उन्होंने लोगों को बहुत अच्छी डायरेक्शन में जो गाइड किया. और अरस्तु जो है वो सिकंदर आज़म का टीचर था, उसका उस्ताद था. तो जो अरस्तु की जो सारी बातें हैं वो, और उसकी जो सारी हकायात वगैरह, उसके जो सारे हकाइक वगैरह किस में ट्रांसफ़र हुए, अलेक्जेंडर द ग्रेट में. एंड देन as students we have read that the king of the Macedonia was very brilliant and the great leader, and he was the father of the Alexander the Great and the trainer of the Alexander the Great as well. That's why he got every type of the skill Alexander from his father, because the great personality, the king himself, was guiding the leader, or was guiding the Alexander the Great about everything. So Alexander got skills inherited. It means विरासती तौर पर उसे जो सारी खूबियाँ हैं जंग के बारे में और दुनिया को फ़तह करने के बारे में और इस सारी चीज़ों के बारे में जो उसे खूबियाँ मिली हैं वो उसे विरासती तौर पर मिली अपने ख़ानदान की तरफ से, अपने बाप से. एंड देन पर्शियन एम्पायर. स्टूडेंट्स, ही गॉट विक्ट्री ऑन द पर्शियन एम्पायर. इट मीन्स जो अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान के इन इलाक़ों से होता हुआ उसने ईरान, इराक़ और उसके बाद जो यूनान के इलाके हैं इन सब को उसने फ़तह किया. और उनके बाद जो पर्शियन की जो दौर हुकूमत है उसको मुकम्मल तौर पर उसने ख़त्म कर दिया. दैट इज़ एंड started the series of the attacks from the Persian Empire. He started his series of attacks. Series means students, it means सिलसिला. सीरीज़ का मतलब होता है सिलसिला. जो उसने अटैक्स का है, जंगों का और हमलों का जो उसने सिलसिला शुरू किया था वो पर्शियन एम्पायर से स्टार्ट किया था. सबसे पहले उसने पर्शियन एम्पायर को मुकम्मल तौर पर अबॉलिश किया, वहाँ पर अपनी हुकूमत जो है उसको सेटअप किया, अपनी हुकूमत कायम की. और उसके बाद उसने पर्शियन एम्पायर से होते हुए दुनिया के इलाक़ों में आया, जहाँ से वो ईरान, अफ़गानिस्तान और कराची से होता हुआ ग्रीस के इलाक़ों में पहुँचा. Okay students, this is the introduction about the Alexander the Great and his skills, and we learned about the tutor and trainer of the Alexander the Great and his inherent skills as well. I think so your concept about the Alexander the Great is clear. So in the next lecture we'll inshallah read about his some achievements and the ways that how he conquered the world. So till then, Allah Hafiz.